Assalamu alaikum. Welcome to lecture 5 of CS 5316. So today we will wrap up our discussion on minimum added distance, and after that we will start talking about textual representation using sparse vectors, and then uh, we will also be introducing the applications of information retrieval and text classification. And then, of course, we do have a quiz towards the end of this class. So the quiz would be around 250 or 255. All right. All right. So are there any questions from previous lecture or any other comment or question? So we were talking about string similarity. And the idea of string similarity is given two strings X and Y. We want to determine their similarity in terms of a score from, let's say, 0 to 1, which would be normalized, or it could be string distance, which would be a distance from 0 or some upper limit. So distance and similarity are related in the sense that one is the opposite of the other. In any case, we are trying to quantify the relatedness or similarity of two strings. And we started talking about the minimum added distance, which was one way of quantifying the similarity between two strings. Uh, just before we go into that, just to reiterate, so why do we need string similarity? What are some applications of string similarity? So can someone remind me of some applications? Any application, any so I got a uh, response summarization. So summarization में किस तरह use होगी? For text classification, okay, especially if you're doing very basic classification and trying to match, let's say, a string with a label, for example. So that can be, uh, uh, it can be used like that, yes. Anyone else? Any other ideas? So there is an application that uh, all of us use almost on a daily basis on our word processing software. And this application has been around for 20, 30 years. Uh, Anyone remember that? So spell correction. So this is a very typical application or common application of string similarity. And so whenever we are using some editor, we can type something that might be misspelled, and the spell corrector would then suggest similar uh, words from the dictionary. And this is easy and is typically done using minimum added distance. Of course, nowadays you can also include other machine learning based approaches as well, but they are used in conjunction with the minimum added distance. It's not like a minimum added distance यहाँ नहीं use होता है, it's still being used, but it can be augmented with additional information. ठीक है? So, for example, there's a example in the slide. Let me just go over the slides.
So how similar it's to, let's say someone has typed GRAFFE. So the system would then recommend the from the dictionary the words that are most similar to it. So it could be giraffe, for example. It could be graft, and so on. So how do you determine which word to recommend? And the one that would be recommended would be the one which is most similar in terms of string similarity with the one that you have written. So that's one very popular application of string similarity. And then you have several applications in bioinformatics or computational biology where you want to match two biological strings. And biological strings, for those who are more familiar with these ideas, DNA sequences and nucleotides and protein sequences, and they're usually represented as strings. So those strings हैं maybe from two different organisms और उनको आपने compare करना है उनको match करना है तो this can be used to do that. Of course, again for these there might be more sophisticated applications as well. And then string similarity can be used for whenever you have information extraction. Whenever you have extracted something, you want to see whether the extracted information is matching your goal truth. So let's say you wanted to extract names of companies from text. So the algorithm will extract those names, then you will match those names with the company's name that you already have. If there is a match, exact match, okay, well and good. But if there's not an exact match, they will give you a similarity score of the matching. And you can use string similarity for matching the outputs of generative AI as well, or generative NLP as well. So someone mentioned summarization. So the output of summarization can be compared with the gold truths character by character. Although this is less common now, as we will see later on, for generative NLP, we typically use semantic similarity. Syntactic similarity, as this string similarity is less commonly used because it's less powerful. Okay. Uh, so one another application which is not on the slide but it's common in our local context is kind of finding similar or finding or matching proper nouns, especially location names. So, for example, addresses, Pakistan addresses are not very standardized. So, if you want to know whether two addresses are exactly the same or very similar, then you can use string similarity. So, for example, यहाँ बेदिया रोड पे एक गांव है. Uh, okay, let me just finish this first. So, for example, so let's say there is a यहाँ एक बेदिया रोड पे एक गांव है which is called लिदड़. So Lidhar, I don't know if there's any standard spelling for this. You can write it as LIDHAR, LIDHER भी लिख सकते हैं, कोई LADAR भी लिख सकते हैं. I've seen all of these spellings being used. और addresses पाकिस्तान में standardized नहीं है, so string similarity can at least give you a close match, an indication of how similar two addresses are. इसी तरह for example मोहल्ला कोई लिखते हैं, कोई मोहल्ला यूं लिख लेगा, कोई मोहल्ला यूं लिखेगा ओ से, and so on. So matching location names, especially in the case of Pakistan, is a good application of string similarity. You can also use match proper names as well. Again, non-Latin names जैसे हमारे उर्दू नाम है या अरबिक नाम है, उनके स्पेलिंग स्टैंडर्ड नहीं होते. तो जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसके लिए भी आप स्ट्रिंग मैचिंग, स्ट्रिंग सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं. So all these names that I mentioned, these are actually named entities in the sense that these are entities belonging to the name, the class of location. तो लेट्स से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में आप नेम्ड एंटिटी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेट्स से लेदर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली आपके पास एक गोल्ड ट्रूथ होगा, उसकी एक स्पेलिंग होगी. तो वो स्पेलिंग आप उसके साथ पे चेक करेंगे ना, देन टू सी वेदर इट मैचेस और एटलीस्ट इट्स समवट सिमिलर और नॉट. ठीक है.
So these are some applications of uh, string similarity. So now let's go back to the quick introduction of minimum added distance again. So let's say you have a string x and y, okay? And so basically x is of length n characters and y is of length m characters. So in general, m and n are not the same, and we want to find the distance between x and y. Okay? So how do we do this? As we mentioned before, last time मैंने discuss किया था example. I'll just go it very quickly again. So dynamic programming use करते हैं because this problem can be solved using this approach. So smaller problems, larger problems की जो solution होगी, you can derive it from the solutions of the smaller problems. And we will see how this is done shortly. Uh, so in general, we need to create a matrix D, which is our distance matrix or minimum added distance matrix. So this matrix is of size, so basically n plus 1 by m plus 1 matrix holding values of MED, minimum added distance. ठीक है? So in general, so D I J is the minimum added distance for x I to y j. So आपका जो string है x to up till character I and y up to character j, इन दो strings का जो similarity होगा, it will be held by this cell of the matrix, which is dij. ठीक है? And this matrix obviously would hold the similarities between all lengths of strings x and string y. And what we are interested is actually d, n, and m. So this is the MED of x and y, the whole string x and the whole string y. ठीक है? The minimum added distance between x and y. ये वाला जो cell है, which would be the last cell in your matrix, going up to the length n of string x and length y of string y, would be would hold the distance or the dissimilarity between x and y. Okay? And we mentioned that there are three operations that are typically used in converting one string to the other, which are insertion, ठीक है, deletion, and substitution. ठीक है? Yeah, of course, if there is no change, there is no substitution. ठीक है? So the cost for each of these operations can be one, as we have typically used previously, but they can be different as well. So the cost for insertion could be different, the cost for deletion could be different, the cost for substitution can be different. So, so in general, they could be all one. So that's one option. Another option is 1 plus 1, और ये 2 है, substitution की cost 2 है. इस particular variation को often times हम Levenstein distance भी कहते हैं. I hope I'm writing the spelling correct. Although ये Levenstein distance की multiple definitions भी होती हैं, so it sometimes is confusing. ज़्यादा commonly इसके साथ associated है where 1 and 1 for insertion and deletion and 2 for substitution. By the way, 2 for substitution का मतलब ये है कि substitution allowed ही नहीं है. So वो 2 किस तरह आया? Because you can get a substitution by first deleting and then inserting. ठीक है? So दो operations आपने किए. So you can think of substitution having a cost of 2. Or in other words, you can say that there is no substitution allowed. And in general, as I said, you can have different cost. So you can have a cost for insertion, you have a cost for deletion, and you have a cost for substitution, which in general are greater than or equal to 0. So less than 0 नहीं हो सकता.
नेगेटिव नहीं हो सकती कॉस्ट। ठीक है। सो so this is the general formulation for the minimum at distance where the cost can be different. So with the use of these cost algorithm is shown here in this slide. तो सेम एल्गोरिदम एक्सेप्ट दैट जहाँ वन वन था अब वहाँ अप्रोप्रिएट कॉस्ट आ गया है। जहाँ हम इंसर्शन कर रहे हैं वहाँ इंसर्शन की कॉस्ट आ रही है, जहाँ डिलीशन है डिलीशन की कॉस्ट आ रही है, और जहाँ सब्स्टिट्यूशन है सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट आ रही है। एंड so one again application of weighted minimum edit distance is again for spell correction. Of course, there can be other applications for biological bioinformatics as well, but those would be difficult to interpret for those who don't understand biology much. But this is very easy to understand. So this confusion matrix shows you if we substitute a letter on the vertical axis with a letter on the horizontal axis, and what is the likelihood that that letter would be substituted. So this is not actually a cost matrix, it's a likelihood matrix. ठीक है। so अब इसमें आप कुछ numbers आप देख सकते हैं। so a, if the actual number was a but you wrote e, the likelihood for that would be around 300 something. So if the original character was e and you wrote a again, it's around 300. ठीक है, so large number with, you are more likely to misspell a with e and e with a. But if you look at some other numbers, let's say a and p for example, so a and p का मेरे ख्याल से cost, if I remember correctly, is 9. So likelihood is 9. इसका मतलब है you are less likely to use or misspell a with p. ठीक है, इसमें दोनों 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 चीजें केटर हुई हुई। एक तो ये कि कीबोर्ड में a and p occurs very far away. So this is the keyboard. You notice that A is on the left side here, P उस side पे, तो very unlikely कि someone has mistyped A and P. और दूसरा ये है कि generally spellings जहाँ A आना चाहिए था वहाँ P typically नहीं आ सकता, और usually इस तरह की mistake नहीं करेगा, but कोई A और E की mistake कर सकता है because they might spell or sound similarly to some people. ठीक है, so both of these factors are taken into account in making this uh, likelihood matrix, not a cost matrix, a likelihood matrix. ठीक है, so you can use this likelihood matrix to develop your cost. Maybe इसका inverse ले लें या इसको normalize कर लें, and then use this in your minimum error distance algorithm. ठीक है, so any questions? So for example A और S का मेरे ख्याल से जो cost है वो 35 है something. A और S कीबोर्ड में दोनों साथ साथ आते हैं, so they are more likely to be misspelled because someone might have mistyped them, but they are not unlikely to be misspelled because in the sense that कि कोई A S के साथ from a sounding perspective or spelling perspective कम flip करेगा, so that's why it's a likelihood is small, but A और E की काफी ज्यादा है where they might sound similarly and someone might confuse के read में READ है या RAED है and so on. ठीक है, so okay, so from this is, as I said, is a likelihood matrix. So and they, so if you want to convert this into a cost matrix, then you will have to kind of take the inverse, or more appropriately एक कोई maximum आप use कर लें उसे minus कर लें. In other words, जो आप हमारे पास A और E की जो वैल्यू हाई थी 300 समथिंग थी, तो उसकी आप कॉस्ट थोड़ी रख लें,
ठीक है, सिमिलैरिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। सो लेट्स से यू कैन गिव दैट ए सिमिलैरिटी ऑफ 1, और लेट्स से ए और पी जिसकी 9 थी उसकी आप हाई कर देंगे, दैट माइट बी ए सिमिलैरिटी ऑफ हाई। मतलब कोई आप मैक्सिमम से इसको सब्ट्रैक्ट करके आप इसको कन्वर्टेड टू कॉस्ट एज वेल। सो दिस इज सेड सिमिलैरिटी और लाइकलीहुड इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनिमम एट डिस्टेंस में कॉस्ट हमको चाहिए। ठीक है। ओके, जस्ट वन फाइनल बिफोर आई रैप दिस अप। ओके, सो सो ऑब्वियसली व्हेन null to null the cost is zero. ठीक है, and if you start adding inserting characters, then the cost would be insertion cost. So let's say insertion cost is 2, तो जब पहला आपने इंसर्ट किया तो कॉस्ट 2 हो जाएगा, दूसरा किया तो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एंड सो ऑन। सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट रो ऑफ योर मैट्रिक्स। सिमिलरली जो फर्स्ट कॉलम होगा, सो फर्स्ट कॉलम में लेट्स से आपने डिलीशन कर रहे हैं, दिस करेक्टर जहां मेरा भी कर्सर है वो जब डिलीट करेंगे टू नल, तो एक कॉस्ट आएगी। लेट्स से ये कॉस्ट 3 है, तो पहली कॉस्ट 3 होगी, दूसरा 6 हो जाएगा, दो 9 एंड 12 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो तो इस तरह डेवलप हो गए। बट फॉर एनी अदर सेल, लेट्स से कोई मैं एक सेल लेता हूँ, लेट्स से उसमें ये वाली वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 4 है, और ये वाली लेट्स से है 3 है। ठीक है, अब मैंने ये वाली सेल भरना है। अब इसमें आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। इन जनरल देयर विल बी थ्री ऑप्शंस। एक ऑप्शन डायगोनल है विच इज यूजली सब्स्टिट्यूशन, एंड दैट विल ओनली occur इफ दीज टू करेक्टर की वैल्यूज डिफरेंट है, सेम है तो ये सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट जीरो होगी। और एक ये है कि ऊपर से हम ये वाला वैल्यू ऊपर जाए, दैट वुड बी डिलीशन, एक लेफ्ट से इधर आए दैट वुड बी इंसर्शन। ठीक है, सो एज आई सेड, लेट्स अज्यूम कि ये वाला सेल जो है कि करेक्टर दोनों का सेम है, लेट्स से दोनों करेक्टर ये सी सी है, ये 2 है। सो आप डायगोनली आएंगे तो इसकी वैल्यू भी, ये वैल्यू भी 2 होगी, एंड अमंग द थ्री वी हैव टू चूज द मिनिमम वन। ये 4 है, 4 ऊपर था, लेट्स से हम यहाँ डिलीशन से इधर आते तो दिस वुड हैव बीन 7। लेट मी से 7 है एक आपके पास ऑप्शन, और आप इधर से लेफ्ट से आते तो हमारा 3 + 2 5। ठीक है, इन सब में से आपने मिनिमम चूज करना है, एंड मिन इन दिस केस वुड बी 2। और जहां से जिस सेल से ये आपने इस सेल को भरा है उसका एक बैक पॉइंटर लगा देना, बिकॉज दैट विल टेल यू हाउ टू अलाइन दिस टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, बैक ट्रेस आप जब करेंगे तो आपकी अलाइनमेंट भी आ जाएगी। ठीक है, सो दिस प्रोसेस वुड बी रिपीटेड एट ईच सेल। आपने तीनों ऑप्शंस देखनी है, तीनों ऑप्शंस में से जिसका मिनिमम कॉस्ट आ रहा है वो वहां भर देना है, और जहां से आ रहा है, इन दिस केस डायगोनल से आ रहा है, वो आपने पॉइंटर लगा देना है। लेफ्ट से ऊपर से आ रहा होता है तो आपने ऊपर का लगाना, दैट वुड मेंट ए डिलीशन। लेफ्ट से आ रहा है तो दैट वुड हैव मेंट एन इंसर्शन, उसका लगा देना। ठीक है, alright, so I think that essentially is it for minimum edit distance. Any questions?
ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली, कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। क्लास में ऑफ कोर्स कुछ थोड़ा बहुत मैंने कम बताया होगा, बट एज फार एज आई एम कंसर्न वी हैव कंप्लीटेड बोथ चैप्टर्स कंप्लीटली। कोई चीज़ एज सच हमने मेजर छोड़ी नहीं है। ठीक है। इफ द कैरेक्टर्स आर सेम ऑफ कोर्स कोई कॉस्ट नहीं होगी, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सो द कॉस्ट वुड बी जीरो। बट इफ द करेक्टर्स वर डिफरेंट देन सब्सटीट्यूशन की कॉस्ट ऐड होगी। तो हमने ऊपर एग्जांपल में सब्सटीट्यूशन की कॉस्ट अच्छे 5 की है, तो ये भी 7 होगा। इनमें से फिर जो मिनिमम आएगा मेरे ख्याल से फिर वो शायद 5 वाला होगा। मैं जस्ट गिव एन एग्जांपल। सो लेट्स से सब्सटीट्यूशन की कॉस्ट आ रही है, तो 2 प्लस सब्सटीट्यूशन की कॉस्ट आपके पास आएगी। तो लेट्स से सब्सटीट्यूशन की कॉस्ट, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि 5 है, तो ये 7 आ जाएगी। एक 7 सब्सटीट्यूशन से आया है, एक 7 डिलीशन से आया है, और एक 5 आया है। तो 5 would then be selected, and then we will put a pointer back to the insertion case. ठीक है। सो सब्सटीट्यूशन उसी वक्त ही होगी जब उस पोजीशन पे एक्स और वाई की करेक्टर्स डिफरेंट हैं। करेक्टर सेम है तो फिर ऑफ कोर्स ऑब्वियसली देयर इज नो कॉस्ट। तो वो यूजली वही फिर सिलेक्ट हो जाएगा, द अदर में कॉस्ट बढ़ जाएगी, अनलेस ऑफ कोर्स कोई और सिनेरियो बन रहा है। सिनेरियो बन सकता है और भी। सो वी नीड टू बी वेरी ऑफ, तो इस तरह का लेट्स से सिनेरियो है 5 और 2 है लेट्स से, और इधर है 2। इन दिस केस लेट्स से अब डिलीशन और या सब्ट्रैक्शन से वैल्यू थोड़ी आएगी। लेट्स से बाय द वे दे माइट बी टाइज एज वेल। जब टाइज होंगी तो आपने दोनों दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंसर्शन से भी वही आंसर आ रहा है और सब्स्टिट्यूशन से भी वही आंसर आ रहा है। सो यू कैन फॉलो बोथ पाथ्स एंड बोथ पाथ्स आर वैलिड। सो इन दिस केस लेट्स से मेन हमारे पास एक 10 होगा, लेट्स से 5 सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट है। ठीक है। एंड देन आपके पास 5 है और एक आपके पास 4 है। ठीक है, तो इसमें से आपने वो चूज कर लेना है। So the cost can be different. I mean, depends on the application. Application will tell you whether the cost of what the cost of insertion, deletion, or substitution क्या होगी. They can be different. And then, of course, they can be same. Again, application dependent. All right. अच्छा. Uh, okay, so before moving on to the next topic, uh, I do have a suggestion. हमने जो originally, if you remember, हमने कहा था कि क्विज की परसेंटेज 15 है और प्रोजेक्ट की परसेंटेज 20 है। एंड देन वी आल्सो हैड मिड टर्म की परसेंटेज 10 है। ठीक है। सो आई वांटेड टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मे बी मूव इट टू द मिड टर्म। सो आई कैन डू ए पोल लेटर ऑन, बट अभी आपके पास कोई इमीडिएट कोई फीडबैक है तो मुझे बता दें। सो मे बी मिड टर्म को 15 कर दूं, मिड टर्म को 15 कर दूं और प्रोजेक्ट 15 में ले आऊं। बस प्रोजेक्ट इज ए बिट टू बिग और एंड पे टाइम क्रंच हो जाता है, और फिर ऑफ कोर्स कुछ लोग कर लेते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते, बट एज एज ए ग्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा हम डिस्टिंग्विश कर नहीं पाते, बिकॉज एवरी वन वुड गो इन एंड राइट वेरी गुड रिपोर्ट्स, और प्रेजेंटेशंस भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। प्रेजेंटेशंस भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो फॉर अस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश समवन हु इज़ रियली गुड एंड समवन हु इज़ जस्ट दैट पता नहीं चलता हमको। सो ओके, सो
एनीवे अभी जो मुझे दो फीडबैक आई है वो यही है कि इट्स ओके, मिड टर्म को मैं बढ़ा दूं और प्रोजेक्ट कम कर दूं, बट आई मे बी प्रॉब्ली डू ए सेपरेट पोल ऑन स्लैक एज वेल। ठीक है। एंड ऑल्सो आई हैव डिसाइडेड कि आपका मिड टर्म अक्टूबर 27 को होगा, दिस इज ए मंडे। ठीक है। So, so midterm would be on October 27. So ये October 27 का is this fine? Is during the midterm week. फाइनल ऑफ कोर्स आपका जो स्केड्यूल्ड एग्जाम है उस वक्त ही होगा। आई डोंट रियली रिमेम्बर द डेट। आपको जंबील पे नजर आ रही होगी, वही डेट है। ऑलराइट, एनी अदर कमेंट ऑन दिस? ऑलराइट, ओके। So now we have about 20 more minutes, so let me start the new topic. अब ये आगे जो टॉपिक है इट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, बट थोड़ा सा सीक्वेंस मैं अपनी तरफ से लेके जा रहा हूँ बिकॉज दिस आई फील इज मोर अप्रोप्रिएट। तो सो वी वांट टू टॉक अबाउट टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। So as you know, representation is essential for any processing. And we are dealing with textual content here, and we want to develop appropriate representations for textual content for our various applications. And if you don't have a good representation, okay, the first assignment would be uploaded today. Actually, वो फ्राइडे को हो जानी चाहिए थी। इट इज ऑल इज डन, आज आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। सो text representation is very essential component in any analysis. So so we have talked about words and we have talked about tokens, we have talked about subwords. So those are the linguistic units of interest. So we would like to use those units and represent them in some way for our analysis. And so let's just say we are talking about words. Okay. So basically, I live in Lahore, for example. So we have four words here. I is one word, live is one word, at is in is another word, Lahore is another word. So there are four words here. And this whole complete group of words or sequence of words is a document, or you can say it's a larger group of words which are we are interested in. Remember, we talked about linguistic unit of interest, that's the smallest unit. There's also a larger unit which we typically called a document. So इन टिपिकल सेंस जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो वर्ड होता है या टोकन होता है, और लॉन्गेस्ट यूनिट जो हम इंटरेस्ट होता है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। एंड दैट डॉक्यूमेंट एज आई सेड कुड बी वन utterance like this, it could be one paragraph, it could be one sentence, it could be one tweet, it could be one email, one web page, one article, depending upon what is our interest. So within that document, our smallest unit of interest is the word or token. ठीक है। सो ये टू एंटिटीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एंड वी विल यूज देम काइंड ऑफ generally because document जब हम कहते हैं we assume it's like a big document, could be a small document as well, like a
an utterance that I just wrote. ठीक है. और वर्ड हम भी जनरली यूज कर लेते हैं, बट इट कुड बी ए करेक्टर, इट कुड बी ए टोकन. ठीक है, कोई भी टोकन जो बीपी से आपने निकाला है. ऑलराइट. सो so what are the easiest ways of representing a document? So as I saw, डॉक के ऊपर मैंने लिखा था, उसमें 4 वर्ड्स थे, आई लिव इन लाहौर. ठीक है. सो obviously you can say that you can consider, if you take words as a smaller units of linguists, we basically represented by the each by the id of each word that occurs in it. So id आपको दे दें, and then you represent it by a sequence of such ids. ठीक है. But we would like a representation that is more expressive. ठीक है. So what is typically done is we create a vocabulary, as you already know, and we define each word in that vocabulary as a feature, and then each document is represented in that feature space. ठीक है. So we already know about the vocabulary. ठीक है. So vocab defines our feature space, and each document is represented in this feature space. ठीक है. So let me now create a bigger two documents. So let's say D1 document one है, I live in Lahore, and let's say D2, she lives in Karachi. ठीक है. And let's say we are using words as vocabulary, and we are also kind of normalizing those words just to avoid that we have too many distinct words, normalizing them to the root words in the dictionary, which is basically called lemmatization. ठीक है. So in that sense, आपके पास डिक्शनरी में क्या होगा, आई है, आपके पास आई है, लिव है, इन है, लाहौर है, एंड देन शी है. अब लिव्स को सेपरेट नहीं मैंने रखा. आई collapse this into one word based on the dictionary. As I said, this is called lemmatization. In is already there, then we have Karachi. तुम्हारे पास ये vocabulary आ जाएगी. ठीक है. एंड vocabulary को आप एक, as I said, is a set of features. You can give them IDs, first position, second position, third position, and then we can represent each document in these. So for example, your document D1 है आपके पास. One simple way is कि आप simply raw counts लिख दें for each of these features. So I का 1 count है, live का 1 count है, in का 1 count है, लाहौर का 1 count है, and कराची का count 0 है. सॉरी, शी का काउंट 0 है और कराची का काउंट 0 है. ठीक है. सो व्हाट अबाउट D2? D2 में क्या होगा, आई का काउंट क्या है, 0, लिव का काउंट 1 है, इन का काउंट 1 है, लाहौर का काउंट 0 है, शी का 1 है, कराची का 1. ठीक है. सो now you have a representation for each of these two documents. Of course, in this case, it's based on raw counts, and of course, यहाँ small documents से
इट लुक्स लाइक ए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जीरो और वन नजर आ रहे हैं सर। ठीक है। So let's say if you take any one of these representations, लेट्स से आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन है डॉक्यूमेंट D1 की। अब इस रिप्रेजेंटेशन से कैन यू रिक्रिएट द डॉक्यूमेंट? आई लिव इन लाहौर फॉर एग्जांपल, और मे बी लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन। D2 में से आप इस रिप्रेजेंटेशन से आप शी लिव्स इन कराची रिक्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू नो, यस, आपके पास वोकेबलरी है तो आप रिक्रिएट वर्ड्स कर सकते हैं, पर यू आर लूजिंग आउट ऑन समथिंग। वो क्या लूज कर रहे हैं हम? लेमाज, ओके, वी आर आल्सो लूजिंग दैट, यस। और अच्छा ठीक है, ओके। सो मॉर्फीम्स, लेमास, जो ये सारी चीज, दीज आर टेक्निक्स ऑल टेक्निक्स टू इंश्योर दैट our vocabulary size does not become very large। ठीक है। ठीक है, so context, I got a question, context, so in other words the position of each word is lost, right? So actually this is let's say, जो पहले में तो शायद इतना ऑब्वियस नहीं है, D2 में आप देखें तो यू कैनॉट रिक्रिएट द, तो शी का जो स्पेस है वो एंड पे आ रहा है, कराची आ रहा है, इन पहले आ रहा है, लिव पहले आ रहा है। So the position of words is lost in general. So this in general is called in IR and in NLP called the bag of words representation. So it's a bag. Bag का क्या मतलब होता है? Set है, it's a collection of words. So you don't know which word would appear at which position. ठीक है? So so the positions of the words in the document are lost, but we do know that a particular word has occurred or not occurred. After, of course, appropriate normalizations. In this case, हमने लेमेटाइजेशन की है। ठीक है। But the interesting thing is, even if we have lost most the position of words for some applications, and for usually simpler applications, they do work very well. So that's why these are very popular until very recently, and I would still we are still continuing with this because ये कोई भी छोटी मोटी आपने एप्लीकेशन डेवलप करनी है, ये वाली प्रेजेंटेशन still works very well. And the most two popular applications for which this works is information retrieval and text classification. So I'm going to introduce these two applications in the context of the bag of words representation. Okay. Of course, these two applications would work also if you had representation that uh, maintained position. But for, as I said, many applications of these tasks, simple representation or simple bag of word representation would be sufficient. ठीक है. Okay, now uh, so I have used I have basically represented each word by its raw count. ठीक है. So this is one strategy. So another strategy is what is known as term frequency. By the way, so कुछ legacy हम terminology use करते हैं. So term, token, words, all of these really mean the same thing. So आपने you need to be, so term basically is one item in the vocabulary. So if
an item is a word, then that would be a word. If the item in the vocabulary is a token that you found from BPE, that would be a token. But typically इसको हम traditionally इसको term IR में use करते हैं. This is how it is known till today, term frequency. So this is one way of also finding the counts of words or weighing each word in a representation. And then of course this is called TF. और इसके बाद एक और होता है term frequency dash inverse document frequency. ठीक है? So let's look at these two and then maybe I think we'll have will be end of time हो जाएगा हमारा. So the term frequency actually so TF of a term in a document D is basically a function of the counts of the words in it. So function of the count of term D in D, T in D. ठीक है? इसमें अब वेरियस ऑप्शंस यूज हो सकती हैं. एक तो यही ऑफ कोर्स रॉ काउंट से यूज कर लें जैसे हमने ऊपर यूज किया था, राइट. सो इट कैन बी सिंपली काउंट ऑफ टी एंड डी. ये लोग यूज करते हैं. एक तरीका हो सकता है काउंट टी ऑफ डी डिवाइडेड बाय बेसिकली लेंथ ऑफ डी, मतलब नॉर्मलाइज कर रहे हैं. सो इफ ए वर्ड occurs let's say 5 times in a document and the total number of words in the document is 100, तो ये 5/100 हो जाएगा. ठीक है. And then key variations are, but the variation that is used in the presented in the book and which I feel is fine, very common and more robust, basically it's basically log 10, or you can use log 2 as well, doesn't matter, as long as you use it consistently, of count t d plus 1 if count t d is greater than 0 and then 0 otherwise. ठीक है. So let's look at this in a bit more detail. The last one. So let's say हमारे पास जो पहला डॉक्यूमेंट था उसमें I का काउंट 1 था. ठीक है. So I का काउंट 1 था, so we will take the log 10 of 1. What is log 10 of log of anything that's 1 plus 1? So this will give you 1. ठीक है. And let's say if the count of a word in a document is 0, obviously this TF would be 0. But if the count is larger, let's say log 10, let's say 50 है, तो आपके पास ये 2 point something वैल्यू आ जाएगी. So we have used the log so that we do not grow the this TF value as the number of words increases. ठीक है. So log 10 of 50 plus 1. So 1 of course is just added there to ensure that आपके पास less than 1 value ना आए. Because if log of 1 is 0 of course. So plus 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा आपके पास. So TF इससे आप वेट कर सकते हैं. So you can build your vectors using these values. So that is one way of doing it. This is just TF so far. अभी IDF मैंने डिस्कस नहीं किया. So TF is based on just the count. So all of these जो formulas और मैंने लिखे हैं, this is for TF. So TF basically TF you can say is a normalized
रॉ काउंट, ठीक है, ऑफ ए टर्म इन ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन हमने किस तरह की हुई है, यूजिंग लॉग। यू कैन ऑल्सो नॉर्मलाइज बाय द लेंथ एंड देयर आर सम अदर टेक्निक्स एज वेल। तो जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे एक टर्म होगी एक डॉक्यूमेंट में, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ ए डॉक्यूमेंट, लेट्स से आपके पास D1 है, और लेट मी टेक अनदर सेट ऑफ वर्ड। सो लेट्स से आपके पास एक डॉक्यूमेंट वोकेबलरी डी है, ए है, और लेट्स से एक्सलेंट है, और लेट्स से व्हाटएवर 10 का लिख देता हूँ मैं, ठीक है। एंड यू हैव ए डॉक्यूमेंट D1, दिस इज लेट्स से लार्ज डॉक्यूमेंट, कोई लेट्स से डॉक्यूमेंट ऑन लेट्स से जियोग्राफी फॉर एग्जांपल। सो द वर्ड डी, रॉ काउंट्स डी काफी ज्यादा आएगा, लेट्स से 100, ए लेट्स से 150 आ रहा है, एंड लेट्स से excellent, let's say 2 दफा आ रहा है, एंड 10 का लेट्स से 1 दफा आ रहा है। सो दीज आर रॉ काउंट्स। अब इसका TF की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो ऑफ कोर्स यू विल टेक द लॉग ऑफ दिस +1, ठीक है। सो एज द नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीजेस दिस वैल्यू वुड इंक्रीज। अच्छा, ठीक है। सो जो TF-IDF है, it basically TF times IDF. So IDF basically is also computed for each term in a document, and I will write this formula, but I think maybe we'll discuss this more in more detail next class. ठीक है? So this is again log 10, uh, the number of documents in the corpus divided by document frequency of term D, term T. So this N ऊपर number of documents and नीचे number of documents that contain T. So this is the inverse document frequency. But इस पे हमने log लगा दिया. Again, just to squash it out. So जो TF-IDF है is basically TF times IDF. ऊपर और में फॉर्मूला लिखा था log 10, ठीक है, काउंट TD +1 multiplied by log 10 number of docs divided by DF of T. तो ये full formula है. So we'll discuss this I think in the next class. So you do have a quiz now, so you can now focus on that. The quiz आपका जो है ना 18 minutes का है. Uh, it's on both sides of the page that you will be given, and you are required to write on the pages and the spaces for each question. ठीक है? No books, no notes, no help sheet, no phone. ठीक है? So I think with that I will end. Any questions? जी. All right. Assignments I think you will get around 10 days. अभी upload करनी है TAs ने. And for this, what we had started today is chapter 11, and especially the first part, the IR part. Not the rag part. Rag part हम बाद में करेंगे. ठीक है? एक rag part भी है, retrieval augmented generation, इसी चैप्टर में, वो बाद में करेंगे. एक ये करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 5 है, which is basically vectors and embeddings. इसको हम कंटिन्यू करेंगे. But along these things, I will also introduce text classification. मेरा मकसद ये है कि आपको क्लासिफिकेशन विच यू हैव ऑलरेडी डन इन मशीन लर्निंग थोड़ा सा इसके साथ इंट्रोड्यूस करें, सो दैट थोड़ी बहुत बैकग्राउंड न्यूरल नेटवर्क की और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की भी मैं दे दूँ. सो सो
सो इन अदर वर्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन और न्यूरल नेटवर्क के सेपरेट चैप्टर्स हैं आपके बुक में, बट आई विल बी गोइंग ओवर दैम मच मोर क्विकली। कवर करूंगा मैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी बताऊंगा थोड़ा सा, न्यूरल नेटवर्क भी बताऊंगा, सिंपल न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल, बट इन वेरी क्विक वे। टेक्स्ट बुक में ज़्यादा होगा, फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर वो उसको रेफर कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू सीक्वेंस मॉडलिंग और ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है फिर